Excuse me, sir. Yes, please tell me. सर आप वो क्वेश्चन एक बार सॉल्व करवा देंगे? नंबर ऑफ सेफ सीक्वेंसेस पॉसिबल मेल किए थे लास्ट वीक बोले थे। Okay, we'll go a little further. If time permits, I'll solve that one. Otherwise not, huh? Okay, sir. Okay. So last class we studied that there are two kinds of system. One is the mono-programming system, and another one is the multi-programming system. In mono-programming system, we don't have to do a lot of work for the memory management is concerned, because directly the program has to be copied to the same address. Whereas in case of multi-programming system, either it is a contiguous or non-contiguous. Last class we discussed about the contiguous. Under contiguous, there are two techniques. One is either fixed partitioning or variable partitioning. Last class we completed up to fixed partitioning. And one issue we are finding in the fixed partitioning, that is, since our whole memory will be divided into number of fixed size chunks, and in each chunk only one program can be kept. We cannot create a program which is equal to the chunk size. That's why if something will be left out in that chunk, that cannot be used by any other program. Okay, and that problem is called as internal fragmentation. Is it clear? Then how can you avoid this internal fragmentation? And what is this allocation policy says that among the n number of chunks, if few programs are coming, what way those programs has to be fit into this? Can anybody tell me which kind of binding is necessary here? Which kind of a binding is appropriate? Compile time. We have to know the spaces available. No, compile time you cannot, because if you think about the compile programming not available. If you think about the compile time binding, I cannot suitable for this. Yes. Execution time binding. Execution time binding. Execution time binding. What is saying? During the execution, the program can change its place. Is it? I don't think so. Load time binding. That is a load time binding. Why it is a load time binding? Mostly because if you know where my each chunk starts, if you just know this, then these are the base addresses. And if my program will be fit into it, if this is the address of 0 and this is become 100, if I want to fit one program here, then if I know this 100 and my numbering will be 0, 1, 2, 3, 4, then the address location will be 100, 101, 100, 200. Yes or no? Sir, it is the case for next fit, no? Not for first. No, any kind of. It may be a first fit, it may be a next fit, it may be a best fit, or it may be worst fit. If you can think like this, suppose by first fit or next fit or best fit, I found out that this place is suitable for my program. Then what should be the address of each line of this program? Since this location is 150, then the address for this program will be 150, 151, 52, 53, like this. And what is the limit for this? Can you tell me what is the limit register will be fixed for this? For this case, the limit will be 200. For this case, limit will be 50, and like this. If any program has to be fit in this particular chunk, its limit register is how much? 300. What is its base register? Quick answer. What is the base register? 350. Why? Because it is 100, it is 50, it is 200. So this address should be what? 250 or not? Yes, got my point? Or 249 वो बोलोगे, वो फर्क नहीं पड़ता है. अब 0 से start करोगे तो कोई बोलेगा 250. Yes, got it? So this will be 350 है. 100, 200, 300, 350 is the starting address. Yes or no? Yes. Got it? What is the base and the limit register for this one? Then how you can avoid this internal fragmentation? This internal fragmentation will be avoided by variable partitioning scheme. Variable partitioning scheme. So what this variable partitioning scheme says that, very interesting.
Previously, the whole memory will be divided into number of chunks, but here the whole memory has only one chunk. If my memory will be 0 to 750, the total memory will be a single chunk. If let's take a program comes P1, which is about 50, then what will do? It will be allocate 50 bytes from here. This is become P1 and this is 50 bytes. Rest how much left? 700. Another program comes. Let's take P2 is 300. Then P2 will be immediately allocated here. That is by 300. Got it? Then what happens now? How much left? 400 left. Okay. Then another comes, that is 100. P3 comes as 100. Then where it will allocated? Very simple one. This P3 becomes 100. Now what you can observe here, always after this only one chunk is available, not more than this. Yes or no? Now what is the free chunk here? This is the free chunk. How much memory is now still available? 300. Yes. Then another process comes, that is a P2, which has become 200. So sorry, P3, P4. P4 become 200. Yes. After this, I'll solve one problem. I brought one program. So P4 is becoming 200. Then how much chunk is currently available? 200, 300, 600. That is 100. Only 100 bytes are available. Then if a new program comes, it has to be fitted here. If a bigger program comes, it cannot be done it. Is there any internal fragmentation comes here? No, sir. Why not? Sir, क्यों बोलिए? memory of एक चंक था, सोचिए, एक चंक था, एक प्रोग्राम आप allocate किए. Whatever left out, again it is used by somebody or not. But in the previous case, I have 5 chunks. Whatever the program I have allocated here, rest of the things, if anything will be left out here, can you able to allocate? No. But here, even if it is a single chunk, I can able to allocate this, a new one. Means there is no internal fragmentation done. Now let's see. Suppose P3 program gets finished. What will happen? Participate. 1 minute में समझ जाओगे. P3 program का काम खत्म हो गया. तो क्या होगा बोलिए? Yes, definitely this area will be free. What is this area? 100. This area becomes 100. How much area is currently free now? 100 plus 100, 200. Means a program comes, let's take 50. Another program comes, that is P4. P5 is coming as a, let's take 30. Then where it will be allocated? Again, the question comes that, sir, when it will be allocated, that is again depend upon some policy. What is the policy? Because I have now 2 chunks. If it is become 2 chunks, which chunk it will be get allocated? I need a policy or not? Like in the previous case. Upon the allocation policy. Yes. In the previous case, since you have a 5 chunks, if a program comes and it can be fit into all, but can you allocate it anywhere? Or you have to find a policy? You have to find a policy, either best fit, next fit, worst fit, or what is that? Fast fit. You are using it. Similarly, when the 2 chunks are available, which is not in a same place, means I have to apply the same policy here. Yes, are you getting my point? Previously, there is only 1 chunk. There is no need to think about what is the allocation policy. But when this program gets free, then this area becomes free. This area becomes free. We have now 2 areas. With these 2 areas, I can allocate something. So if a P5 comes with a 30, then where I can allocate it, again that is depending upon the allocation policy. So here also there will be a fast fit, best fit, like this. Same 4 are there. Fast fit, that is best fit, that is next fit, and that is worst fit. Okay, all are same. Yes, but that is not the question here. We understood this. Let's take 30 will be allocated. What happens now? A small program 30 gets allocated. What is this? P5. And how much is left out? 70. Can this 70 will be utilized or not? It can be utilized because there is no internal fragmentation. Yes. Now question comes. Suppose P6 comes as 120. Can you allocate or not allocate? How much free space are currently available? Very simple. How much free space are available? 170. क्यों? यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 70 है. Total 170. But my program size is 120. This 120 cannot be fit into this. What is the quick answer? Why not? Because it is contiguous. First thing, it is a contiguous. As for the contiguous memory location, I cannot divide it. That's why it cannot be allocated. Now, what's the question? The question is, even if I have a sufficient free space, because of a non-contiguously those free space are available,
my program cannot be fit into it, and that issue is called as the external fragmentation. सुन रहा हूं, आपका बात सुन रहा हूं. यस, बोलिए. अभी आ रहा है आपका आंसर ही आ रहा है. Then I'll ask what is the solution for this that you have already told. What you are saying, that is the solution for this external fragmentation. Non-continuous. What is the issue? The issue is that this free space is available, that is the 70, and this free space is available, that is 100. Even if I have a 170 space, but a 120 program cannot be allocated because it is not in a contiguous memory allocation, and as per the variable partitioning is concerned, my program has to be stored at a single chunk. Yes, so this problem itself is external fragmentation. Then how to avoid this external fragmentation? He has answered. What he has told? What is the work of this external fragmentation? The external fragmentation solution is one that is called as compaction. What is compaction is saying? All the free spaces wherever it is available, you combine together. कैसे करेंगे? वो तो बहुत बड़ी बात है. यहाँ पर 70 था, वहां पर this is 100. Now this 70 and 100 has to be combined together. How we can do this? So we have to move the processes up. Very nice. Means these programs has to be shifted to this place, or these programs has to be shifted to this place. Any way is applicable or not? मतलब यहाँ पर 170 free space create कीजिए या ऊपर 170 free space create कीजिए. And the compaction is saying that combining all the free space into a single chunk so that you can allocate it. But this compaction is not so easy. Why not? How we can shifting? आप बोले कि प्रोग्राम को शिफ्ट कर दीजिए, मतलब क्या है? नहीं, मेमोरी एड्रेस मतलब बोलिए. फिर से हम लोग को वो मैपिंग करना होगा. मैपिंग मतलब यहाँ पर मैपिंग मतलब क्या करना पड़ेगा? मैपिंग मतलब क्या है? एक वर्ड हम बोल देते हैं मैपिंग. आप मत अलग तरीके से सोचिए, मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ. मैपिंग कर देंगे मतलब मतलब कि जैसे एलोकेट हुआ है. ये जो 200 इंस्ट्रक्शन था कहां पर था? आप अगर देखोगे 300, 400, 450 करीब करीब कहां पर था? 450 के पास. 450 से लेके कहां पर डालोगे आप? 380 पे. 550 minus 70. This is 50, this is 300, this is 30. 380. So 380 onwards this program has to be shifted. मतलब क्या है? कॉपी कीजिए 450 लोकेशन को 380. That's all or not? इसका मतलब वही है कि नहीं? यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा गया है, this program has to be copied to which location? 380 locations or not? Then automatically a free space will come out or not? Like if it is an array, assume that if it is an array, and in this array something is present here. Let's say 2 is here, there 9 is there, and here 8 is there, 6 is there, 4 is there. मैं बोल रहा हूं इन लोग को शिफ्ट करूंगा, मतलब क्या है? सर 8 को कॉपी कीजिए सर, दिस को कॉपी कीजिए सर, दिस को कॉपी कीजिए, उतना ही तो कीजिए. Then what to do? All the programs is going to be copied. It is not so easy. Yes. Think about a 4 GB memory. Time waste होगा. 4 GB memory. Here one chunk 3, here one chunk 3, here one chunk 3. If you want to combine all together, then many programs present in different location has to be copied to a different place. It will take some time. Now the question comes, where to move? Agar we have to move up or you have to move down. Look into it. I can move these things towards left hand side, or I can move these two towards right hand side. कर पाऊंगा कि नहीं? To manage these free spaces, one can say that why don't you move these 3 to this side? One idea है. Or somebody will say that why don't you move this towards this side? Yes, but which one is more preferable? Sir, left to right. So if you move these 2, the number of movements only 2. But in this case, if you move this, number of movements gets 3. Now it is only 2 programs. Think that thousands of programs are present in a different chunk of memory. Can your algorithm quickly decide that which program has to move where so that my number of movements will be less? It is really a complex algorithm. So that's why the compaction, even if it is a good solution for the external fragmentation, but deciding which memory has to be moved, that is a really tragic task. That is one. Another,
Which kind of binding will not supported for this? कंपाइल टाइम लिंकर तो नहीं करेगा ना, वो तो एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग कंपाइल टाइम नहीं होगा. Compaction. Can your compile time binding programs will be supported? No. If the programs are fixed in this, you cannot do it. Last आपको उठा दीजिए, सो गए हो, सुन रहे हैं, सो गए हैं थोड़ा, आप आगे आ जाइए, सुनोगे. लास्ट टाइम सुने थे, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, कुछ नहीं होगा, आप सुनोगे, कुछ नहीं बोलूंगा, एक भी चीज आपको नहीं पूछूंगा कि बोलूंगा, आप आ जाइए तो सुनोगे. प्लीज रिक्वेस्ट, नॉट बाय फोर्स. तो सुनोगे, आप सुनोगे तो और एक बार पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको. यस, अंडरस्टूड नाउ? यस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल? कंपाइल टाइम बाइंडिंग इज नॉट पॉसिबल. एंड आल्सो कैन योर लोड टाइम बाइंडिंग इज पॉसिबल? नो सर. Load time binding is usually not possible. Reason? After once the program gets loaded, loader has no role to play because it is already present here, and when you want to bring it here, that is not possible. So that's why your load time binding and compile time binding is not suitable for this. But the compaction is a solution for external fragmentation. Yes, but since this compaction is again a tedious process, that's why what they're saying, the same external fragmentation can be sought out by a new technique called as paging and segmentation. Yes, today's topic is this one. समझ पाए क्यों हम लोग पेजिंग एंड सेगमेंटेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं? Because this compaction solution is not a proper solution at all. I cannot apply the compaction solution in all scenarios. The reason, my binding may be compiled or load time, which is not suitable here, and even if I apply the compaction, the number of movements has to be too high. That's why it is not more suitable. So that's why what is the solution? The solution is either a paging or a segmentation. Before going to the paging and segmentation, समझ पाए कहां से कहां तक आए? पहले हम कॉन्टिग्यूअस आया, फिक्स से प्रॉब्लम आया इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में अवॉइड किए वेरिएबल पार्टीशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में कॉम्पैक्शन में किया, कॉम्पैक्शन सुइटेबल नहीं हुआ, फिर आ गए पेजिंग एंड सेगमेंटेशन. बिफोर गोइंग टू द पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, एक प्रॉब्लम लास्ट ईयर का जो एग्जाम में आया था लाया हूं, आप बस लिख लीजिए. एक है 56 बाइट का एक मेमोरी है, बोल रहा है दिस इज ए वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग. दिस इज ए 56 बाइट मेमोरी, 56 bytes memory, and P1 is coming with 20 size, P2 is coming with 14 size, P3 is coming with 18 size. Then after P2 gets deleted, means completed, then P4 is coming with 8 bytes, then P1 gets deleted and P2 gets 14 bytes. समझ में आ गया क्या क्या बोल रहा हूं? These programs are coming in this sequence. P1 20 bytes का आया, P2 14 byte का, P3 18 बाइट का, फिर P2 डिलीट हो गया, मतलब P2 खत्म हो गया, देन P4 आया, देन P1 खत्म हो गया, देन P2 आया, and you have to do solve this by variable partition. Okay, and what to do? Which allocation they are saying? He is saying best fit it is used for the allocation policy. Then please design the memory. समझ पाए क्या बोल रहा हूँ? इस सीक्वेंस में प्रोग्राम आ रहे हैं. पहले P1 आया, उसके बाद P2, उसके बाद P3, उसके बाद P2 डिलीट हो गया, मतलब उसका काम खत्म हो गया, फिर आया P4, फिर आया P1, फिर आया P2. यस, फिर से P1 डिलीट हो गया, P2 फिर से आया 14 बाइट का. सो ही इज सेइंग यू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस इफ इट इज यूजिंग व्हिच फिट? बेस्ट फिट. Similarly you can design for OR standard. Do it quickly. Yes, this is one. कॉम्पैक्शन लगाएंगे? नहीं, कॉम्पैक्शन नहीं चाहिए. कॉम्पैक्शन यूज मत कीजिए. बस अब कहां पर मेमोरी एलोकेट होगा और कहां पर नहीं हो पाएगा. ओके, this is the first question. Second question I'll quickly give once you finish it. A वेरिएबल पार्टीशनिंग का, एक फिक्स पार्टीशन का भी लाया हूं. वेरिएबल पार्टीशन शायद सब लोग कर पाओगे. हाँ, P2 दो बार है 14, फिर P2 डिलीट हो गया था, फिर से स्टार्ट हुआ, हो पाएगा ना? P2 यहाँ खत्म हो गया था, फिर से P2 जानबूझ के वो दिया है.
सो दैट यू डोंट हैव टू कंफ्यूज हो जाओगे, P2 तो खत्म हो जाएगा फिर नहीं लूंगा। एक बार a डॉट आउट को कंपाइल कर रन करने के बाद फिर से क्या आप रन नहीं करते हो दैट्स डन कंप्लीटेड। सीक्वेंस आएगा P2 P4 P3 खत्म ना सबका, वो इजी है बिकॉज 2 मार्क का ही था। सो फर्स्ट P1 आ गया 20, हाँ P1 बिकम 20, P2 बिकम 14, P3 थोड़ा आप याद रखिए कितना बचता है, हाँ देन P2 खत्म हो गया, कितना बाइट का 14 बाइट का, फिर P4 आया 8, कहां पर एलोकेट होगा वही P2 बेस्ट बिट, सिंस ये बेस्ट बिट दिस इज 14, दिस इज बहुत ज्यादा है अगर देखेंगे 56 से, है कि नहीं? नहीं सर वो होगा ना 4 बाइट लेफ्ट है तब ए कितना 4 ओनली 4, हाँ थैंक यू, मैं कैलकुलेट नहीं किया, सॉरी थैंक्स। सो 4 है, ये 14 है, फिर 8 आया, सो 8 मतलब यहां पर ही फिट होगा, सो दिस 8 विल बी एलोकेटेड हियर, इफ 8 गेट्स एलोकेटेड, if 8 gets allocated, so 8 यहाँ allocate हो गया, फिर P4 का 8 allocate हो गया, फिर से ये आप फ्री है, so कितना बाइट फ्री है 6 बाइट, हाँ 6 बाइट फ्री है। फिर आया P2 14, क्या होगा P1 कंप्लीट होगा, P1 कंप्लीट हो गया हमारा, P1 कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट, सो 20 बाइट यहाँ खाली है, मतलब P2 यहाँ हो गया, वेरी सिंपल। और एक पूछे हैं कि 1 2 3 6 पार्टीशनिंग था, फिक्स पार्टीशनिंग नहीं, हाँ एक क्वेश्चन 6 पार्टीशनिंग, 1 2 इजी है ये, आप लोग के लिए कुछ नहीं है। सो ए था 300 का 300, दिस इज बिकम 600, दिस इज बिकम 350 200 350 200 750 125 750 125 programs are coming like this. P1 is 115, P2 is 500, P3 is 358, P4 is 200, and P5 is 375. They are saying you apply the first fit, best fit, worst fit, next fit, and apply what is the internal fragmentation in each case. लास्ट वाला 125 है, ओनली 125। सर क्या क्या करना है, बेस्ट फिट वो बोल रहे हैं कि बेस्ट वर्स्ट नेक्स्ट एंड फर्स्ट अप्लाई कीजिए एंड फाइंड आउट इन व्हिच केस दैट वुड बी मोर इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, बिकॉज़ in a fixed partitioning internal fragmentation will be there or not. He is saying in which allocation scheme there will be a more internal fragmentation. वर्स्ट वाला में नहीं, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, हाँ एक बार कर दीजिए, सबका कैलकुलेट कर दीजिए, कोई 2 कीजिए और कोई 2 कीजिए, वो भी हो पाएगा। बेस्ट नेक्स्ट कोई कीजिए 200 और 206 सो दैट सब में आ जाएगा। बेस्ट में कितना आया बस बोलोगे, टोटल इंटरनल फ्रैगमेंटेशन बोलोगे, देन वर्स्ट में, देन फास्ट में एंड नेक्स्ट में। अगर बिडिंग हुआ तो जाके मैं करूंगा, बिडिंग नहीं हुआ तो ठीक, मतलब सबका सही आ। सर P4 it is 200 और 206, दिस इज 200, P4 is 200, 358 है, 358 500 115 375। कर दीजिए, इवन इफ इट इज ए सिंपल वन, डोंट फील लेजी, हाँ डू इट। सर बेस्ट में तो एक एलोकेट ही नहीं हुआ P5, ठीक है, जो एलोकेट नहीं हुआ बच गया, हमारा क्या है आप लिखोगे, लेकिन इंटरनल फ्रैगमेंटेशन आपका कितना हुआ? ओके सर उसको भी ऐड कर दीजिए इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, ठीक है ना, क्योंकि वो फिट नहीं कर पाया बेस्ट वाला। तो सर जो गैप है मतलब वो जो एलोकेट नहीं हुआ कुछ भी इसमें, हाँ अगर यहाँ पर कुछ एलोकेट हुआ है, सोचिए यहाँ पर कुछ एलोकेट हुआ है, जो बच गया है वो है आपका इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पे भी कुछ हुआ होगा, यहाँ पे भी कुछ होगा, जो पूरा बचेगा दैट इज
सर अगर एक तो पूरा स्पेस बच गया मतलब हाँ 200 सर। या 350 हाँ पूरा उसको बच भी गया ऐड करोगे, उसको भी ऐड वो भी करोगे, होगा। ओ क्योंकि 5 प्रोग्राम्स है ना, टोटल हाँ 5 ठीक प्रोग्राम्स, नहीं हुआ। ओके 6 पार्टीशन है। ओके। कहा कौन सा? 350, 300, 600, 350, 200, 750, 125। बेस्ट फिट कितना आया? कोई कीजिए, कोई ऐड कीजिए, दोनों का बैठे हो ना, कर पाओगे, जो दो दो बैठे। किसमें बेस्ट फिट? 115, 977 best fit. Somebody saying 977 best fit. Is it correct? सर 1521 आया नहीं पता। 152 कोई बोल रहे हैं। Okay, no problem. Then I'll do the best fit first, at least, huh? At least I'll do one. So 115 कहाँ होगा पहले? सर 1152 आ रहा है सर। 115 115. Okay. So this P1 is here, huh? This is 115 का. Then P2 500 का कहाँ पर? 600 पे। Very nice. P2 आ गया यहाँ पर 500 पे। Then P3 358, 358. P4 200. यहाँ exactly no. P4 200. सही क्या ना? Then P5 375. नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। So हमारा कितना बच गया? यहाँ पर करीब बचा 10, यहाँ पर बच गया 360, मतलब आपका 392। 392। वेरी नाइस। 392 बच गया, यहाँ 0, ए 350 बच गया, ए 300 एंड दिस इज 100। ऐड कर पाओगे कि नहीं? हो पाएगा कि नहीं? इजी है, सबके लिए कर पाओगे? और डाउट है? एक टोटल करके बस जो भी है, एक नेक्स्ट फिट कर देता हूं और नहीं करूंगा। एक नेक्स्ट फिट, फास्ट फिट सबको आता है, पोस्ट फिट भी सबको आता है। नेक्स्ट फिट एक कर। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ सर इसमें तो क्वेश्चन है कि टू फाइंड व्हिच वन इज हैविंग हाईएस्ट वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो सर डायरेक्टली तो बोल सकते हैं ना कि इसमें वर्स्ट होगा आंसर। नो, वो डायरेक्टली बोल सकते हैं। अगर वो पूछेगा कि सबका कैलकुलेट करो और करो, आपको करना पड़ेगा ना। हाँ, इसलिए कैसे करते हैं वो बस दिखा देता हूँ, किसका अगर डाउट होगा। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ओके सर। ओके, सो दिस इज 300, बस बोल दीजिए 300, 600, 350, देन 200, 750 एंड 125। So this is next fit वाला। बेस्ट फिट में 375 ऐड नहीं होगा? P5 तो नहीं हुआ ना उसमें? कहाँ पर? बेस्ट फिट में आपने यहाँ जो मेमोरी लोकेशन बच गया उसको ही ऐड कर दे। ओके, P5 नहीं करना है, ठीक है। उसको नहीं। सो यहाँ पर कौन सा पहले आया? 115 हियर, P1 115। नेक्स्ट P2 कितना है? P2 है 500, 500 मतलब यहाँ पर 500। P3 358, 358 करेक्ट, 358। P4 कहां पे? कहां पे नेक्स्ट फिट? यहाँ के रोटेट ना बोला था, because last allocation is here. From last allocation onwards you have to check. Then what is the location for this? P4 है हमारा 200, 200 यहाँ पर allocate नहीं हो पाएगा, तो कहां जाएगा? 350 में, 350 में हो पाएगा। So this is P4 become 200. Similarly, then P5 is 375. 375 नहीं होगा फिर। हो गया, काम खत्म। बना पाओगे? Finish, done. Then we'll go for the next one. Next one little boring है, that is called as paging. What is paging? Yes. First, I'll give a overall picture, then I'll draw a picture, then I'll explain what is the paging. Okay, what is the requirement? The paging first says that it is a non-contiguous memory allocation.
Second step he is saying it avoids the external fragmentation. सर हाँ सर इसके पहले में आप बोले कि वो पेजिंग इसके अंदर आता है ना, वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सॉल्व करने के लिए। नहीं एक्सटर्नल एक्सटर्नल बोला ना। हाँ एक्सटर्नल तो सर वो तो क्या बोलते सो कंटिन्यूअस था ना। नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन सॉल्व करता है बट विद द सपोर्ट ऑफ ए नॉन कॉन्टिग्युअस मैनर। ओके not in this means now you are shifting towards the non-contiguous memory allocation, not the contiguous memory allocation. Okay, so it supports the non-contiguous memory allocation and avoids this external fragmentation and also support multi-programming environment. Multi-programming environment. Yes, ये सबको पता है what is multi-programming environment means what? More than one program at a time stored in the memory. And a non-contiguous is basically saying that the whole program will be divided into number of parts. Each part may be stored in a different location, not to be contiguous. Okay, and avoids external fragmentation. How we're going to this? So what I did, my program is a.out. Try to solve a.out. Size of the program is only 16 bytes. Okay, what I took 16 byte का एक मेरा executable file and my RAM size is 32 bytes. The RAM size is 32 bytes. Yes, and this program size is total is 16 bytes. Then what the paging does? The whole program will be divided into number of pages. What does it mean? Program में कितना lines है एक एक करके सुनिए तो that कुछ भी एक problem नहीं आएगा. Program में कितना lines होगा? अगर each line become 1 byte, 16 lines. The 16 lines will be divided into number of pages, and each page assume that contains 2 lines. Then कितना number of यहाँ पर page होगा? 8. Very simple or not? 16 लाइन का प्रोग्राम है. 16 लाइन का प्रोग्राम मतलब क्या है? The address space of the program is 16 bytes. जो हम पढ़ रहे थे ना, the address space of a process is 4 GB. Here assume that it is only 16 bytes, and this 16 byte means 16 number of lines are present. कोड कुछ होगा, and this 16 line को कैसे वो divide किया? Number of pages. And please remember, in a program the page size are equal. Like in the previous case, the partition may be fixed but of a different size, but here the page size are equal. Okay, एक एक करके लिखा हूं. क्या बोल रहा है? Page sizes are equal. First thing I am saying, and he is saying the page here, the page size is कितना है? 2 bytes. Yes, अभी देखिए अगर 2 bytes से कितना नंबर ऑफ पेज होगा? 8 पेज. सो 1 2 3 4 अच्छी तरह से 5 6 7 8. Very nice. Yes, if there is 8 pages, how can you number the pages? कैसे नंबर? पेज 0 नंबरिंग करेंगे हमारा बाइनरी में. पेज 0 पेज 2 0 0 0 0 0 1 करके कितना बिट्स चाहिए 8 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए? 3 बिट. तो क्या क्या होगा बोलिए? 0 0 to 7 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. सही लिखा कि नहीं? What is this? These are the page numbers. समझ में आ गया? Each पेज के अंदर कितना लाइन्स है? 2 लाइन्स है. तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितना है? 16. 16 लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एड्रेस कितना चाहिए? कितना बिट का एड्रेस? 4 कि नहीं? 16 लाइन से जैसे 8 पेजेस है, आप बोले कि 3 बिट्स चाहिए. 16 लाइन से कितना बिट चाहिए? 4 बिट्स. यस, अभी देख लीजिए. इफ इट इज दिस, ईच पेज पे कितना लाइन्स है? 2 लाइन.
Can I tell? 0, 1. This line will be 0, this line will be 1, this line will be 0, and this line will be 1, and this line will be 0, and this line will be like this or not? In every page there will be 2 lines or not? Can anybody tell me? Here the first line is the which line of the whole program? This particular line is the which line of the whole program? Which line? 9th? सपोर्टेड कौन है? क्योंकि ये 2 2 2 2 8 प्लस दिस इज द 9th लाइन. आपका फर्स्ट लाइन का एड्रेस कितना है? 0. 9th लाइन का एड्रेस क्या होगा? 8 होगा कि नहीं? 9th लाइन का एड्रेस 8 होगा कि नहीं? अगर 0 से शुरू हुआ सो ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और नॉट? 8 होगा कि नहीं? नाउ यू डू दिस. व्हाट इज द लाइन नंबर हियर? 0. व्हाट इज द लाइन नंबर हियर? 1. आप इसको एंड इसको कंबाइन कर दीजिए. कितना आता है? 1 0 0 0. इज इट 8 और नॉट? समझ पाए? ए वाला लाइन कौन सा होगा बोलिए तो? ये 0 1 0 1 2 4 5 6 लाइन. 6th लाइन मतलब 0 से कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा लाइन होगा? 5th लाइन. 5th लाइन को 4 बिट में रिप्रेजेंट कीजिए. 5 को 4 बिट में रिप्रेजेंट कीजिए. कितना होगा? 0 1 0 1. वही आता है कि नहीं? इसको कंबाइन कर दीजिए. इतना ही आया कि नहीं? तो व्हाट यू अंडरस्टूड नाउ? इफ यू नो द पेज नंबर and if you know the line number, combining both, I'll get the line of the whole program. समझ में आ गया? अगर मैं बोलता हूं आप बोलोगे 1 0 1 1, बोल पाओगे कौन सा पेज का कौन सा लाइन है? यस सर. 1 0 कौन 1 सा पेज का कौन सा लाइन है? इसको मत देखिए, इस पार्ट को मत देखिए, इस पार्ट को मत देखिए, यहां से देखिए. 3 बीट है किसके लिए? पेज के लिए. ए बीट है किसके लिए? लाइन के लिए. सो कौन सा पेज का कौन सा लाइन वो है? दिस इज 4 0 1 मतलब 5 पेज का. दिस इज सेकंड लाइन और नॉट? इज इट 5 पेज और नॉट? 0 1 2 3 4 5 पेज का सेकंड लाइन ए वाला है कि नहीं? समझ में आ गया? मीन्स इफ आई हैव a 16 number of lines, if I divided into number of pages and each page have a equal size, now my address is a consist of 2 things. What is that? I can say, sir, part of the address is my page number and next part is my offset. मतलब कैसे समझ पाए? अब 3 बिट लिए पेज नंबर का, 1 बिट लिए ऑफसेट का. ऑफसेट क्या बताता है? पेज नंबर क्या बताता है? कौन सा पेज में कौन सा लाइन. सर सबको समझ में आया? हाँ बोलिए, पूछिए. 6th पेज होगा ना सर? ओ 6th पेज ही तो है ना. ओ 6th पेज है, देखिए ना. 1 2 3 4 5 6. बट पेज नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से. मतलब 5 नंबर पेज कितना? आप सही बोले. ए वाला पेज 1 से काउंट करेगा तो कितना नंबर पेज है? 6. करेक्ट और नॉट? अगर 1 से कैलकुलेट करूंगा 1 2 3 4 5 6, कौन सा नंबर पेज है? आपके हिसाब से 6 नंबर पेज और नॉट? बट हम जब लिखते हैं कहां से शुरू करते हैं? हमारा नंबरिंग 0 से. तो 0 से करने से 5 नंबर पेज आया है कि नहीं? समझ पाए? यस सर. गेटिंग? सो नाउ यू अंडरस्टूड वेयर दिस पेजेस आर. नाउ माय प्रोग्राम इज रेडी. प्रोग्राम को कौन किया? ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पेजेस में. देन व्हाट इज सेइंग? Depending upon my page size, the RAM is also divided into number of frames. क्या बोल दिया? If my page size having 2 lines, the whole RAM will be divided into frames and each frame of 2 lines. क्या किया पेजिंग ने? पेजिंग ने बोला कि आप पहले पेज साइज बना दीजिए. अगर पेज साइज मेरा 2 लाइन का है, पूरा 32 बिट मेमोरी को ना आप 2 लाइन से ही डिवाइड कर दीजिए. सो कितना ऐसे बनेगा? 16. वेरी नाइस. सो यहां पर टोटल कितना फ्रेम्स बना? 16 फ्रेम्स बन जाएगा. एंड ईच फ्रेम का साइज कितना होगा? 2 बाइट्स. मतलब क्या है? आवर फ्रेम साइज इज इक्वल टू पेज साइज. समझ गए? नेक्स्ट स्टेप. यस, हो गया. तो अभी मैं 16 फ्रेम्स बना देता हूं. टाइम है 10 मिनट, हो जाएगा थोड़ा बहुत. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया? यस, बोल पाओगे? इफ देयर आर 32 बाइट्स, ईच एड्रेस कितना बिट का होगा? 32 नंबर ऑफ लाइंस कैन बी स्टोर इन द रैम, तो रैम का एड्रेस कितना होगा? 5 बिट्स। कितना बिट्स है? रुक जाइए, ऑफलाइन स्टूडेंट बोलिए, आपका कितना लाइंस है रैम में रखने के लिए? 32 वाला। 32 लाइंस होगा तो ईच लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट का एड्रेस चाहिए? 5 बिट का। 2 to the power 5 32 है कि नहीं? यस, अभी बोलिए। बट कितना नंबर ऑफ फ्रेम्स है यहाँ पर? 16। आप बोले ना दो लाइन का अगर फ्रेम्स है, कितना फ्रेम्स बना? 16 फ्रेम्स। बट 16 फ्रेम्स को बनाने के लिए कितना एड्रेस चाहिए? 4। मतलब आप बोल पाओगे इसका एड्रेस होगा 0000 0001, लाइक दिस लास्ट वन होगा 1111 एंड ईच फ्रेम के अंदर कितना लाइंस है? दो लाइंस है। आप बोलोगे सर इसके अंदर भी 2 लाइंस है, इसके अंदर भी 2 लाइंस है, इसके अंदर भी 2 लाइंस है, इसके अंदर भी 2 लाइंस है। अभी डिवीजन समझ गए? वो क्या किया? आप प्रोग्राम को डिवाइड कर दीजिए पेज में, रैम को डिवाइड कर दिया फ्रेम में, एंड बोला कि पेज साइज जो है फ्रेम साइज वही। यस, वो करने के बाद वो क्या बोला? कैन दिस पेजेस विल बी फिट इनटू ए फ्रेम? यस और नो? कैन दिस पेजेस विल बी फिट इनटू ए फ्रेम? यस और नो? यस सर। हो पाएगा ना? दो साइज का पेज है, 2 साइज का फ्रेम है, तो पूरा उठा के एक पेज को एक फ्रेम में डाल दूंगा कि नहीं डाल पाऊंगा? तो वो भी क्या किया? कितना नंबर ऑफ फ्रेम यहाँ पर पेजेस था? 8। उस 8 को लाके डिफरेंट लोकेशन पे रखा। कहां रखा? सपोज इसको 000 पेज को यहां रखा, 001 को यहां रखा, 010 को यहां रखा, 011 को यहां रखा, फिर रखा 100 को यहां रखा, फिर 101 को यहां रखा, फिर 110 को 101 के बाद कितना था? 110 को यहां रखा, फिर 111 को यहां। What he has done? Different page he has fetched and put it in the different frames. Is it a contiguous or non-contiguous now? Non-contiguous बन गया है कि नहीं? Yes. So different pages आया, कहीं पर भी रख पाएगा. Now, is it removing external fragmentation? External fragmentation क्या बोलता था? There are spaces are available, but not in a contiguous manner, so that you cannot allocate the memory. जैसे 120 बाइट का हमारा प्रोग्राम आया था, लेकिन एक जगह पर 100, एक जगह पर 70 था, 100 रख नहीं पा रहे थे। बट यहां पर क्या किया? इवन इफ माय प्रोग्राम साइज इज बिगर एंड मेमोरी इज नॉट कॉन्टिग्युअसली अवेलेबल, one part is kept here, another part is kept here, another part is kept here, like this he has kept it. Is it necessary now a external fragmentation problem? Not at all, because he has divided this program into small parts like pages, and each page will fit into a different location of the frame. बन गया? Yes. हाँ पूछिए सर। तो मैप कैसे करेगा? मैप कैसे करेगा पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है, बस रख दिया, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रख दिया है। बोला कि स्टूडेंट लोग आप आइडेंटिफाई करो, इफ माय सीपीयू, नाउ व्हाट द सीपीयू विल डू? प्रोग्राम इज रेडी, मेमोरी इज रेडी, सीपीयू अभी एग्जीक्यूशन करना शुरू करेगा। सपोज सीपीयू कहां से एग्जीक्यूशन करना का शुरू करेगा? सी प्रोग्राम कहां से? मेन से, मेन फंक्शन से शुरू करता है कि नहीं एग्जीक्यूशन? सोच लीजिए मेन प्रोग्राम का लाइन यहां से शुरू होता है, पूरा प्रोग्राम है ना, बड़ा सा प्रोग्राम। सोच लीजिए मेन जो जहां पर लिखा होगा वो इस इंस्ट्रक्शन पे लिखा है। बोलिए मेन का एड्रेस कहां पर है? 1001 की नहीं, क्योंकि वो 100 वाला पेज का 1th लाइन पे मेन लिखा गया है। सो सीपीयू क्या जनरेट करेगा? नाउ द सीपीयू, थोड़ा सा ये डिवाइड कर देता हूं, नाउ द सीपीयू जनरेट्स ए एड्रेस। सीपीयू क्या जनरेट किया? एक का एड्रेस जनरेट किया। क्या एड्रेस है वो है 1001। इज इट ए लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस? लॉजिकल एड्रेस। क्यों है?
बिकॉज माई 100 का 1 लाइन कहां पर है बोल पाओगे? कहाँ है? 100 का 1th लाइन कहां पर है? अगर देखोगे यहाँ पर है। बोल पाओगे किस एड्रेस में होगा? पूरा एग्जैक्ट एड्रेस बोलोगे, रैम का एग्जैक्ट एड्रेस बोलोगे। इसका पिछले वाला क्या होगा? 111 कि नहीं? वेरी नाइस। कहां पर है फिर? 11101, क्योंकि ये जो 2 लाइन आया होगा वो कहां पर हुआ होगा? ए लाइन पे। तो इसका क्या होगा? 100 वाला पेज यहाँ पे मैपिंग हुआ है, मतलब मेरा एड्रेस कहाँ है? 11100 इज माय फर्स्ट लाइन, 11101 इज माय सेकंड लाइन ऑफ नॉट। समझ पाए? यहाँ पे होगा, मतलब किसी एक को पता होगा कि 1001 वाला लाइन 11101 पे है कि नहीं? जो सीपीयू ढूंढ रहा है, द सीपीयू इज सर्चिंग फॉर व्हिच लाइन? 1001 लाइन, बट एक्चुअली रैम में कहां पर है? 11101 पे है कि नहीं? मतलब somebody has to be converted this logical address to a physical address of it. Getting my point? कौन बनाया था? एक डायग्राम बनाए थे। CPU generates a logical address given to whom? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम क्या है? कन्वर्ट दिस लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। देन माय लॉजिकल एड्रेस इज दिस, फिजिकल एड्रेस इज दिस। लॉजिकल एड्रेस में कितना पार्ट है? पार्ट बोलिए। 2 पार्ट। क्या है? एक है पेज नंबर और एक क्या है? ये ऑफसेट। समझ पाए? लेकिन अभी पता चलना चाहिए। कोई एक पूछा, सर ये इसको कैसे पता होगा? ये पता तो नहीं होगा, कहां पर है? तो वो क्या करता है? सर क्यों आप एक टेबल नहीं बना देते हैं? कितना टेबल? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नंबरिंग क्या होगा? 0 0 0 0 1 0 1 0, सॉरी सही लिखा ना? 0 1 0, फिर 0 1 1, फिर 1 0 0, फिर बोलिए 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर 1 1 कर दिया। एक टेबल बनाया। टेबल का अंदर क्या लिखा? सोच लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। 0 0 0 0 0 0 1 पे 0 0 1 कहां पर है? बोल दीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए। ये वाला कौन सा होगा? देखिए 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कौन सा में है? 0 0 0 यहाँ पे है, 1th लोकेशन, मतलब 0 0 1 पे है। 0 0 1 कहां पर है? देखिए तो 9 मतलब कितना है? 1 0 0 1। 0 1 0 कहां पर है? देख लीजिए 0 1 0 0 1 0 12 पे, 12 मतलब 8 4 0 0 12 पे। 0 1 1 कहां पर है? 3 पे। सो 3 पे मतलब 0 0 1 1। फिर 1 0 0 कहां पर है? 1 0 0 1 0 पे 14 पे, 14 मतलब 8 4 2 0। देन हो गया। तो 1 0 1 1 0 1 कहां पर है? 1 0 1 1 0 6 पे है। सो 6 मतलब क्या होगा? 0 1 1 0। तो फिर 1 1 0 कहां पर होगा? बंद कर दूंगा 8 पे। 8 पे मतलब 1 0 0 0 लास्ट। 1 1 1 कहां पर है? हमारे 4 पे, 4 मतलब 0 1 0 0। एक अगर टेबल में होगा, कैन दिस मैपिंग विल बी इजी? कैसे करेगा? सीपीयू जनरेट किया क्या? फिर से बोल रहा हूं, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस हैज हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स, पेज नंबर एंड ऑफसेट, and there is a table named as a page table. What this page table contains? The number of lines present in the page table is equal to what? Number of pages or number of frames? Very nice, number of pages. जितना नंबर ऑफ यहाँ पेजेस है उतना नंबर ऑफ यहाँ पर लाइंस होगा कि नहीं? And each line contains what? The logical, that physical address where that page is stored or not. Physical one. Each line of this
contains what? The frame address where that page is stored. कि नहीं? ये स्टोर हुआ कि नहीं? तो अभी कैसे ढूंढेगा? This part, this logical address divided into two parts. इसमें पेज नंबर ढूंढेगा. कहां पर पेज नंबर है? 100. 100 कहां पर है? ये 100. 100 मतलब यहाँ पे 1110. यस. कितना हुआ? अरे ओ ए कहां पर है? 1110. 1110 का लाइन पे है 14. ये वाला लाइन ऐड हो जाएगा. हाँ, कंबाइन कर दीजिए, देन जनरेट ए फिजिकल एड्रेस. दिस थोड़ा सा आइडिया आ गया क्या क्या? यस, he has given the whole logical address. ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम क्या है? He maintain a page table. What is written? Every page belongs to a program is stored in which frame. He has kept this information, and from this logical address he got the page number. Page number को search किया. So searching this is a order of 1 or order of n. Quick. Searching in page table is order of 1 or order of n. 1 क्यों है? Array. Because it is a simple array and it is a continuous expression. 0, 1, 2, 3. This. If somebody knows the base address, quickly he reach at the fourth place or not. Searching order of 1 में क्या मिला उसको? फ्रेम बेस एड्रेस, मतलब ये एड्रेस मिला. बट उस फ्रेम का किस लाइन पे है? जो लाइन. When you are searching this one and this frame combine and generate what? 1, 1, 1, 0, 1 address where it is present. Then memory management unit बता दिया कि इस एड्रेस में आप जो ढूंढ रहे हो ये है, जाके ले जाइए. खत्म हो गया. That's all पेज. सर हमेशा फ्रेम साइज और पेज साइज सेम होगा. हाँ, फ्रेम साइज शुड बी इक्वल टू फ्रेम साइज, चेंज नहीं. पेज ओके सर अगर हो जाता है क्या प्रॉब्लम होगा? Fragmentation. देन फ्रेम साइज क्या प्रॉब्लम होगा? सर वो फिट नहीं होगा ना, तो फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा. हो सकता है. क्यों? इफ माय फ्रेम साइज इज बिगर देन पेज साइज, एक पेज एक फ्रेम में रहेगा, जो बच जाएगा कोई नहीं यूज कर पाए. हाँ, that is internal fragmentation. Yes, is there internal fragmentation present here? No, but there is internal fragmentation. कोई बता पाओगे? सर अगर ये प्रोग्राम अगर 15 बाइट्स का होता तो सर आप बोल दिए हो जाता. क्या हुआ? वो बोल रहे is there any internal fragmentation present here? सर अगर ये प्रोग्राम सर 15 बाइट का होता तो फिर सर होता सर फ्रेगमेंटेशन. हाँ होता. वही तो बोल रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ मैं ऑफलाइन स्टूडेंट को. Is there any internal fragmentation present in this case? There is a possibility. कब होगा? देखिए, जो लास्ट वाला पेज है, इससे कुछ गारंटी है ऑलवेज इट विल बी 2 टू द पावर में आएगा? नहीं है. द नंबर ऑफ लाइंस इनसाइड द प्रोग्राम मे बी 15. अगर 15 होगा, एक वाला साइज यहाँ पर खाली है कि नहीं? एंड ए जहां पर मैप हुआ होगा उस फ्रेम में एक बाइट खाली होगा कि नहीं? समझ पाए? अगर मेरा प्रोग्राम साइज है 15 एंड पेज साइज है 2, लास्ट पेज जो होगा एक खाली होगा कि नहीं? एंड व्हेन दिस पेज इज मैप हियर, देयर आल्सो 1 बाइट विल बी फ्री और नॉट? कैन दिस बाइट विल बी यूज्ड बाय एनीबॉडी? नो. देन क्विक आंसर क्या होगा? द इंटरनल फ्रैगमेंटेशन फॉर ए प्रोग्राम इन पेजिंग इज ओनली ऑकर्ड इन व्हिच पेज? लास्ट पेज. उससे और नहीं कि नहीं? आप जब डिवाइड कर दिए, कहां पर बाकी रह जाएगा? ओनली लास्ट में बाकी रहने का चांस है, मिडिल में तो कभी बाकी नहीं रहेगा. समझ में आया? सो नेक्स्ट पूरा डिटेल बताएंगे. है तो हम क्या क्या किए, लास्ट खत्म कर देना. क्या क्या किए? हम प्रोग्राम को लाए, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को. एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का नंबर ऑफ लाइंस होगा, उस लाइन के हिसाब से हम पेज साइज के हिसाब से उसको नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड कर दिया. एंड ईच पेज को लेके डिफरेंट प्लेस रैम में रखे. रैम में कहां पर रखे? जितना आपका पेज साइज होगा उतना साइज का फ्रेम हम बना दिए. पूरा पेज लिए वहां फ्रेम में डाल दिए. डाल के तुरंत एक पेज टेबल बना दिए, जे किस नंबर पेज कहां पे रखेंगे. इट इज नथिंग बट ए इंडेक्स फॉर दिस. समझ पा रहे हो? सपोज सोच लीजिए एक बड़ा सा बुक है, उसका डिफरेंट वॉल्यूम है.
एंड वॉल्यूम यहाँ लाइब्रेरी में रखा गया है डिफरेंट रैक में। तो आपका जो इंडेक्स फाइल होगा लाइब्रेरी के पास वो क्या लिखा होगा, इस बुक का 7th वॉल्यूम कहां पे, एंड 7th वॉल्यूम का कौन सा पेज वो आपको पता है। 7th वॉल्यूम मतलब ये है उस 7th वॉल्यूम का कौन सा पेज, कौन सा लाइन, कौन सा है, आइदर 1 लाइन और द 2nd लाइन, वो कहां पर होगा, 7th वॉल्यूम वाला फाइल जहां पर यहां होगा वहां उसका 2nd और 1st लाइन विल बी द लाइन व्हाट यू आर गोइंग टू रीड। समझ में आया थोड़ा बहुत। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे सर। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द गेट। गेट में करीब करीब 6 से 8 मार्क आता है ओनली मेमोरी मैनेजमेंट। सर 100 मार्क से 8 मार्क बताइए कितना है। हाँ बोलिए तुरंत। सर जीरो सेगमेंटेशन फॉल्ट के लिए तो सर पेज साइज मतलब 1 इंस्ट्रक्शन जितने होना चाहिए, तो सर पेज का मतलब बेनिफिट सर क्या है सर। पेज थोड़ा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पेज साइज कैसे डिसाइड होता है, whether it has to be increasing is better or decreasing is better, all these things will come। हाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। yes, ठीक है ना। बंद हो गया सर। इसमें मैक्सिमम जो अभी आएगा इसमें क्या बोलते उसको फ्रेगमेंटेशन, वो तो एक पेज होगा। कल पूछूंगा, आप रेडी करके रहिए। व्हाट शुड बी द एवरेज फ्रेगमेंटेशन, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फ्रेगमेंटेशन। ओके आप कल याद करके रखिए, बुक ना देख के। हाँ सर। CS3 आप ऑनलाइन स्टूडेंट बंद हो गया। हाँ बंद कर देता हूँ। थैंक यू सर। हाँ ओके। रोल नंबर CS3, रोल नंबर 388, 519, 522, 721, 748, 758, 1375, 1375, 1446, 1454, 1454, 731. You online I am not calling you, only offline students I am calling. You can leave the meeting. 1456, 1584, 1786, 1868, 1868. Thank you. 1869, 1746, 1752, 1744, 1747, 47, 1751, 54, 1754, 55, 1800, 1806. So all will get 1 mark today. One second. 1677 बोल दीजिए थोड़ा। 1677 ना, 1677 और एक 1782 ऐड कर दो। ये जो मुझे मिला है इतना मिला है, ठीक है ना। डाउट अभी नहीं होगा। पेन दिया ना आपको, पेन आया गिरा। हाँ बोलते रहे। DSA आप पूछे थे ना, अब आपको टाइम दूंगा। आप